In last class, we have completed theoretical part of transformer, right? It was lecture 2 and 3. Construction, vector diagram was over. Connection of circuit parameters over. Per unit system was over. ठीक, अब हमें कैलकुलेशन की तरफ जाना है. It is losses, efficiency, voltage regulation in transformer. So this is lecture number 4. And in last class, we have completed vector diagram and per unit system. न्यूमेरिकल पार्ट से शुरू करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज लॉसेस इन ट्रांसफार्मर. ठीक, नाउ वी हैव ट्रांसफार्मर. जो बेसिक डिजाइन है उसमें कोर है. कोर आयरन का बना हुआ है एंड उसके बाद वाइंडिंग है. वाइंडिंग कॉपर से बनी हुई है. वाइंडिंग में करंट है और कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स है. ठीक, सो बेस्ड ऑन बेसिक डिजाइन we can say that there are 4 types of losses in transformer. The first one is copper loss. Second one is iron loss. Third one is dielectric loss. And fourth one is stray load loss. और इसमें से इन दोनों को कहते हैं, we call it major loss. ये बहुत कम होते हैं, we can say it is minor losses. ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन ट्रांसफार्मर में कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कॉपर लॉस, आयरन लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड स्ट्रे लोड लॉस. अब इसको एक एक करके समझें. द फर्स्ट कैटेगरी इज copper loss. It is due to I square R loss in winding. कॉपर से कौन बना हुआ है? वाइंडिंग. तो वाइंडिंग में होने वाले लॉस को हम कॉपर लॉस कह सकते हैं. ओके, ऑल्सो फर्दर ये प्राइमरी वाइंडिंग में भी होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होगा. करंट से कौन सा लॉस हो सकता है? इट इज रेजिस्टिव आई स्क्वायर आर लॉस ओनली. इसके अलावा और कौन सा लॉस होगा करंट की वजह से? नथिंग. सो वी कैन से दैट PCU, copper loss of transformer, PCU is equal to I1 square R1 plus I2 square R2. Yes or no? जी सर. ठीक, अब can I write PCU is equal to I1 square R1 I1 square R1 plus I2 square R2 को हम क्या I1 square R2 डैश लिख सकते हैं? जी.
which is also equal to I1 square common R1 plus R2 dash. That means PCU copper loss is equal to, what is R1 plus R2 dash? I1 square R01, right? Or we can say PCU is equal to I1 square R1 को हम लिख सकते हैं I2 स्क्वायर R1 डैश प्लस I2 स्क्वायर R2। जैसे I2 स्क्वायर R2 कन्वर्ट किया था, आप I1 स्क्वायर R1 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। So this will be having I2 square common R2 dash plus R2. Sorry, R1 dash plus R2. What is R1, R2 plus R1 dash? I2 square R0 2। तो तीन फॉर्मूले हैं, आप जिससे चाहें, जो आपको कंफर्टेबल हो, आप यूज कर सकते हैं। तो now clearly we can see that copper loss depends on I2. I2 is a variable or constant? ट्रांसफार्मर पे लोड अगर चेंज होगा, I2 वेरिएबल है। Yes, sir. Since PCU depends on I2, पहला पॉइंट, that is on load। ट्रांसफार्मर पे ये जो लॉस है वो लोड पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या ट्रांसफार्मर पे लोड कभी कांस्टेंट होता है? नहीं सर। बदलता रहता है ना, लोग अपने घर में स्विच ऑन ऑफ करते रहते हैं। जी। इट इज ऑन लोड, देयरफॉर इट इज आल्सो known as variable loss of transformer। इसको वेरिएबल लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली चीज है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है इसको। आप मान लीजिए आपको ट्रांसफार्मर खरीदना है, आप किसी डिपार्टमेंट में हैं और आपको बोला गया कि हमें एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है, आप जाइए और खरीद के लाइए। ठीक, तो जब आप ट्रांसफार्मर खरीदने जाएंगे तो क्या आप पूछेंगे नहीं इसमें लॉसेस कितने हैं, इसकी इफिशियंसी कितनी है? ये सुनो, जी। जैसे जब आप बाइक खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं तो माइलेज पूछते हैं जी सर। ना, तो क्या वो कांस्टेंट होता है? नहीं सर। अब डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे भी ना, कैसे आप उसको यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पूरा 1 लीटर ऑयल बर्न कर दिया आपने, आपकी गाड़ी आगे खिसक ही नहीं पाई, जगह ही नहीं थी, तो दैट टाइम योर माइलेज विल बी 0 किलोमीटर पर लीटर। ये सुनो, जी। तो जो चीज इतनी हाईली वेरिएबल है उसको भी कंपनी क्लेम करके देती है कि इतना आपको मिल सकता है। एक रफ आइडिया देना पड़ता है यूजर्स को। हालांकि कॉपर लॉस पूरी तरह से लोड पे वेरिएबल है, लोड हटा देंगे तो कॉपर लॉस 0 हो जाएगा, लोड बढ़ाएंगे तो कॉपर लॉस बढ़ेगा। और लोड पूरी तरह से ट्रांसफार्मर पे वेरिएबल होता है, लोड कांस्टेंट नहीं होता है। फिर भी जब लोग ट्रांसफार्मर खरीदने जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर को अपने स्पेसिफिकेशन बताना पड़ता है कि इसमें कितना लॉस है, कितनी इफिशियंसी है, राइट? तो फॉर रेफरेंस वी कैन से for reference, the given copper loss is always the rated copper loss, or we can say that copper loss at rated load। रेटेड लोड को समझते हैं ना? रेटेड लोड का मतलब मैक्सिमम लोड। ये सुनो, जी। थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट इसमें है। मान लीजिए हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, उसको हमने लोड कनेक्ट किया रेजिस्टेंस, इट इज 2 ओम।
चेंज्ड टू 5 ओम, लोड इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? Increased. इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है बेटा। दिस इज नॉट द लोड। जो पावर आप लेते हैं वो लोड होता है, या जो करंट आप लेते हैं वो लोड होता है। फॉर 2 एम्पियर 2 ohm current will be 5 ampere. For 5 ohm current will be 2 ampere. तो जो आप इस बैटरी से ले रहे थे वो घट गया। 5 ampere is the greater load, right? लोड बढ़ाने का मतलब होता है इम्पिडेंस को कम करना, करंट बढ़ाना। करंट इज एक्चुअली more appropriate quantity to represent load. बात क्लियर है? now Yes. suppose rated load is equal to I2, then rated copper loss is equal to PCU is equal to I2 स्क्वायर R02। R02 तो चेंज होगा नहीं, लोड के चेंज होने के साथ मतलब I2 चेंज होना। R02 ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस वो नहीं चेंज होगा। सर लोड चेंज थोड़ा होने का मतलब सर जी थोड़ा फॉर्स को दिखाइए ना, थोड़ा लेट हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे क्या? सर उसका स्क्रीन हटा दीजिए, वाईफाई दिखा। ठीक है देख सर, लीजिए, हो जाएगा बाद में देख लो। ज्यादा हो गया ना। नाउ द रेटेड कॉपर लॉस इज PCU which is I2 square R02. Now if load is changed, I2 क्या था? रेटेड लोड। रेटेड मतलब मैक्सिमम, उससे ज्यादा लोड आप नहीं दे सकते। So if load is changed, that means I2 is changed to XI2। लिख सकते हैं I2 is changed to XI2, therefore PCU dash XI2 whole square into R02। That means PCU dash is equal to X square PCU. This is, we can say, variation of copper loss with load. This is variation of copper loss with load. आगे चले। जी। And X is called fraction of rated load example for 50% load X is equal to 1 by 2, for 25% load X is equal to 1 by 4, etc. And maximum value of X is equal to 1। 1 से ऊपर नहीं हो सकता। It is fraction of rated load for full load or rated load। लैंग्वेज क्लियर है आपको?
सर जी सर आपने ये अभी ये क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस जो आई आई टू है ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ एंड आपने बोला कि जस्ट जो पिछला वाला डायग्राम आपने बोला कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो 2 से 5 ओम तक चला गया, चेंज कर दिया। तो एग्जाम्पल के उसमें लिए लिया मतलब था मैं, लोड समझाने के लिए। नहीं ना सर, वही मतलब तो उसमें जी लाइक रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो गया एंड करंट का वैल्यू लो हो गया, दोनों आपस में लाइक वो कंपनसेट नहीं हो रहा है। नहीं, थोड़ा मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोड? द डिवाइस व्हिच कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी कॉल्ड एज लोड। यस और नो? जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम जी करता है वो लोड है। ठीक। रिटर जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, इट विल बी हायर लोड, हाई जी लोड। जो कम पावर कंज्यूम कर रहा है वो लो लोड। तो कंजम्पशन ऑफ पावर एक्चुअली लोड को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं आप? ये जी सुनो, सर। जी अब ये कंजम्पशन ऑफ पावर रेजिस्टेंस से, इम्पिडेंस से या वोल्टेज से कैसे रिलेट होगा? इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। मोस्ट प्रैक्टिकल कंडीशंस, या कंडीशन एक ही कंडीशन होती है, लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इतना आपको पता होगा। जी आपके घर में सप्लाई मीन्स 220 वोल्ट का आता है, राइट? जी अब इसको हम मान लें 200 वोल्ट। ठीक। 200 वोल्ट का सप्लाई आपको डिपार्टमेंट से मिला। आपके घर में मान लीजिए एक फैन है, फैन का रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक। अगर उस फैन को आपने ऑन किया तो 20 एम्पियर करंट लेगा वो। ये सुनो, जी एक और फैन है। अच्छा, इस कंडीशन में आप सप्लाई से कितना ले रहे हैं? 20 एम्पियर। एक और फैन ऑन किया आपने, 10 ओम। इससे ये भी अब लेगा 20 एम्पियर। तो अब हो गया 20 + 20, इट इज इक्वल टू 40 एम्पियर। तो जैसे जैसे आप लोड कनेक्ट करते जाएंगे, जो करंट टेकन और पावर टेकन बढ़ता जाएगा, हम कहेंगे कि लोड बढ़ता जा रहा है। ये सुनो। जी जी ठीक। अब यहाँ पे समझिए, when this fan was not connected, total resistance of circuit is 10 10 ओम। Ten. जी एक और 10 ओम कनेक्ट कर दिया, now total resistance of circuit is 20. 20। कहाँ से? पैरेलल कनेक्शन बेटा। Wow, okay, okay. हाफ Okay. टोटल कनेक्शन, टोटल लाइक रेजिस्टेंस इज व्हाट? 5 Five, और 5 five, four. 5 ohm. So if all these fans or whatever elements are connected, if we collectively call it as load, so high load means what? Low impedance. And light load या low load means what? High impedance. असल में आपको इम्पिडेंस को देखने की जरूरत नहीं है, आपको करंट को देखने की जरूरत है कि जिस तरह का कनेक्शन हमारे पास होता है, वहां पे रेफरेंस में हम करंट को ही लोड मानते हैं। हाई करंट मीन्स हाई लोड, लो करंट मीन्स लो लोड। हाई करंट में ज्यादा लोड कनेक्टेड है, कम करंट मीन्स कम लोड कनेक्टेड है। बात समझ रहे हैं? जी सर। Yes. ठीक। आगे चलिए। और
रेटेड लोड का मीन्स मतलब मैक्सिमम लोड, उससे अधिक लोड नहीं हो सकता है। ओके, जी। ना आगे चलते हैं हम लोग। Titla, how much we completed? Copper loss. Copper loss and properties of copper loss are completed. ठीक, रिड्यूस करने के लिए आप अच्छे मटेरियल का यूज करेंगे, अच्छे मटेरियल का यूज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसका नाम कॉपर लॉस है। नाउ नेक्स्ट वन इज iron losses. Iron losses of transformer are also known as core losses, right? So we can define iron losses or core losses of transformer. Iron losses or core losses of transformer occurs in ट्रांसफार्मर कोर। ये लॉसेस ट्रांसफार्मर कोर में होते हैं, ठीक, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होते हैं, ठीक। नाउ अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। Hindi din तो ko पहला lagi है sa एडी करंट लॉस एंड सेकेंड वन इज हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक। आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस जो हैं वो ट्रांसफार्मर में किस वजह से होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक। अब उसको अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक। अच्छा, एक चीज हमने वेक्टर डायग्राम में ही चेक कर लिया था कि फ्रॉम नो लोड से फुल लोड मशीन के कोर में जो फ्लक्स है क्या वो कांस्टेंट रहता है? जी। फ्लक्स से ही तो लॉस हो रहा है, राइट? जी। So we can say that since from no load to full load flux in machine is constant. मशीन का फ्लक्स कांस्टेंट, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड फ्लक्स इन मशीन is constant. Therefore, iron losses are also constant and does not depend on load. तो कॉपर लॉसेस वेरिएबल लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, ये डिपेंड नहीं करते लोड पे, लोड बढ़ाते घटाते रहिए आयरन लॉस चेंज नहीं होगा, नो लोड पे भी आयरन लॉस उतना ही होगा, ठीक। नाउ इसमें से एक एक को देखना पड़ेगा। व्हाट इज एडी करंट लॉस? एडी करंट लॉस क्या होता है? पहले भी देख चुके हैं आप ना, कंस्ट्रक्शन डिजाइन में ही देखा जा चुका है इसको। व्हाट इज एडी करंट लॉस? एडी करंट लॉस मींस व्हेन अल्टरनेटिंग फ्लक्स cuts the cross section of transformer core circulating localized
currents are induced inside the core, which are known as eddy currents. And loss due to these currents, this current is called eddy current loss. इसको आप eddy current loss कहते हैं. ठीक. Now eddy current loss का या eddy currents का जो ग्राफ या पाथ है वो ट्रेस करना आसान नहीं होता है. तो इसकी वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते हैं. प्रैक्टिकल करके ही एडी करंट लॉस निकाला जा सकता है ना. प्रैक्टिकली इट कैन बी evaluated as this eddy current loss WE is KE B max square F square T square V. What is KE? Is coefficient of eddy current loss. Dmax is maximum flux density in the core. F is frequency. T is thickness of lamination. V is volume of core. नोट कर लीजिए. Okay, sir. नाउ क्वेश्चन लिखिए. इस फॉर्मूले से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ मिलता है फॉर्मूले की वजह से. ठीक. A transformer operating on 200 volt 50 hertz has eddy current loss of 100 watt. What will be its approx eddy current loss if supply becomes 200 volt 25 hertz. ट्राई करेंगे आप लोग. ऑप्शन दे दूं. Yes, sir. ऑप्शन है 100 watt, ऑप्शन बी 50 watt, ऑप्शन सी 125 watt, ऑप्शन डी 25 watt. चलिए आंसर बताइए. $25.
125। आपको लगता है अगर 25 आंसर होता तो मैं क्वेश्चन आपको देता? बेस्ड ऑन फार्मूला व्हाट वी कैन सी, एक मिनट, पापा पढ़ा। पापा एक सेकंड, हम भी पढ़ा रहे बेटा, एक मिनट, हर कोई पढ़ाई से भागता है ना। एडी करंट लॉस इज KE B max स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। समटाइम्स आपको यहाँ पे V नहीं मिलेगा, वॉल्यूम नहीं मिलेगा किसी किसी बुक में। वॉल्यूम नहीं लिखा होने का मतलब है कि इस वॉल्यूम को KE में इन्वॉल्व कर लिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ एडी करंट लॉस में। एनीवे वॉल्यूम कैन बी कांस्टेंट, so WE या एडी करंट लॉस वी कैन सी हियर प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर दिख रहा है? जी। जी। It will be proportional to F square if all other things are constant. ये constant T constant, but B max constant नहीं है। So if we go from EMF equation, E या V is equal to 4.44 phi m F N1. So phi m is proportional to B max is proportional to E by F और V by F। देख सकते हैं क्या सप्लाई वोल्टेज चेंज हुआ है? जी नहीं। नहीं चेंज हुआ है। So B max is not constant, B max भी चेंज होगा। एडी करंट लॉस is proportional to, बाकी सब कांस्टेंट, V स्क्वायर बाई F स्क्वायर into F स्क्वायर। कैंसिल, वोल्टेज कांस्टेंट है, एडी करंट लॉस कांस्टेंट, तो आंसर इज 100 वाट। प्लीज रिपीट करिए लास्ट वन। So from eddy current loss formula it is clear, if eddy current loss is KE V max square F square T square, the T square is constant, KE is constant, everything else is constant, frequency is varying. Eddy current Yes, sir. loss will be proportional to F square if B max is constant, but B max is flux, maximum flux, which is not constant. आप induced EMF के फॉर्मूले से देखें, it is phi m F is proportional to E, 4.44 constant, number of turns constant. So flux is proportional to E by F या V by F। आप प्रोपोर्शनैलिटी के लिए आप यहाँ पे B max की जगह V स्क्वायर बाई F स्क्वायर पुट कर सकते हैं, into F square, F square cancel, it will not depend on frequency। ओके सर। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में ये दिख रहा है कि एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट? एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एडी करंट लॉस चेंज होगा। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सी, राइट? आप फ्रीक्वेंसी चेंज करने का कोई तरीका जानते हैं आप? वोल्टेज चेंज करने के लिए तो ट्रांसफार्मर ही है, बढ़ाइए घटाइए कम ज्यादा करते रहिए। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का कोई तरीका? मालूम नहीं सर। आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स यूज करने पड़ेंगे, साइक्लो कन्वर्टर्स, AC to AC, जी सर। ठीक। और अब प्रैक्टिकल, अब जब कन्वर्जन में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का दो ही तरीका होता है, आइदर V is kept constant और V by F is kept constant। इस फॉर्मूले में या इस क्वेश्चन में हमने V कांस्टेंट रख करके फ्रीक्वेंसी चेंज की है। V कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, एडी करंट लॉस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। V by F कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो V by F कांस्टेंट मींस B max कांस्टेंट, एडी करंट लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर। जी क्लियर? नाउ आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, if frequency is varied keeping V is equal to constant,
then eddy current loss is independent of frequency. Second point, if frequency is varied, keeping V by F is equal to constant, then eddy current loss is proportional to F square. ठीक, आगे चले। जी। Next one is hysteresis loss. क्या आप लोग एमएफटी में कर चुके हैं वैसे पहले? हिस्टेरेसिस लॉस होता है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर की वजह से। आपका जो कोर है वो अल्टरनेटली या अल्टरनेटिंग नॉर्थ साउथ होता रहता है ना, जी। और कोर आयरन का बना हुआ है। आयरन के पास एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स को रिटेन करने की। पूरी कहानी लिखने का सेंस नहीं है, आप पहले एक बार लिख चुके हैं। जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड। दिस इज H proportional to I. This is B magnetic flux density. जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है, करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता है। एक समय आएगा कि वो सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा, राइट? अल्टरनेटिंग करंट है ना, करंट बढ़ेगा, करंट घटेगा। फिर जब करंट डिक्रीज करता है, मशीन या कोर का फ्लक्स वापस डिक्रीज करता है एंड करंट के जीरो होने पे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं रहता। बात समझ रहे हैं? जी। आयरन को मैग्नेट के पास रखिए, फिर वापस हटाइए, तो आयरन भी मैग्नेट बन जाता है ना। कभी भी आयरन में आप जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या आयरन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को आयरन के अंदर ले जाइए, जब आप बाहरी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड रिटेन कर लेता है। हम इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। इतना फ्लक्स रिटेन हो गया। अब इस रिटेन फ्लक्स को खत्म करने के लिए निगेटिव करंट चाहिए। ठीक, तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वो पहले इस फ्लक्स को खत्म करेगी। ठीक, जितना निगेटिव करंट या इंटेंसिटी चाहिए फ्लक्स को खत्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं कोएर्सिविटी। ठीक, उसके बाद यही कोर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, और वापस इसी डायरेक्शन से रिपीट होता है। या नेगेटिव रिटेंटिविटी, नेगेटिव कोएर्सिविटी। सो
in each half cycle of magnetization and demagnetization of core, there is some energy consumed to remove retained flux from core. रिटेन्ड फ्लक्स को रिमूव करने में हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है. सम एनर्जी कंज्यूम टू रिमूव रिटेन्ड फ्लक्स, या रिटेंटिविटी को रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है. सम एनर्जी कंज्यूम टू रिमूव रिटेन्ड फ्लक्स which is known as hysteresis loss. ठीक, अब इस कर्व को हम हिस्टेरेसिस कर्व या बीएच कर्व भी बोलते हैं. ठीक, एंड the average hysteresis loss is equal to the area of given loop. जो लूप बना है, इस एक लूप का जो दिस एरिया है, शेडेड एरिया, इस पूरा एरिया जो है वो एक साइकिल का हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एवरेज लॉस. ठीक, अगेन it can be practically calculated as, इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं. Hysteresis loss is say WH is equal to KH B max to the power n FV. What is KH? Coefficient of hysteresis loss is maximum flux density. This is frequency. This is volume of core. बताइए, डन? Now जी we go further. We have third loss. डाइलेक्ट्रिक लॉस. कॉपर लॉस कॉपर में होता है, आयरन लॉस आयरन में होता है, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कहाँ होगा? डाइलेक्ट्रिक में. डाइलेक्ट्रिक मींस व्हाट? इंसुलेटर. इंसुलेटर. ठीक, तो इंसुलेटर में जो लॉस होगा वो डाइलेक्ट्रिक लॉस है. अब वी हैव व्हाट? एलवी वाइंडिंग, वी हैव एचवी वाइंडिंग, पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच में, और अब आपने बीच में इंसुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है. क्या जैसे जिस तरह से कोई भी दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट है क्या? नहीं है. तो जैसे कोई कंडक्टर परफेक्ट नहीं होता है, किसी का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है ना, वैसे ही कोई इंसुलेटर भी परफेक्ट नहीं होता है.
कुछ तो करंट पास करेगा, और करंट पास करेगा तो लॉस होगा। ये सुनो, करंट पास होगा तो लॉस होगा, और उस लॉस को आप क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक लॉस। So based on nature, we can say nothing is perfect. So no insulator is also perfect. And if current passes through insulator, the loss is known as dielectric loss. तो कह तो देते हैं, लेकिन इतना खराब डाइलेक्ट्रिक कोई होता नहीं है, या जो लॉस हो रहा है वो कॉपर लॉस आयरन लॉस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसीलिए ये लॉस इतना छोटा है कि इसको एग्जिस्टेंस के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में ये कभी नहीं आएगा। किसी भी ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन में डाइलेक्ट्रिक लॉस कैलकुलेट करते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक। इसीलिए पहले ही इनको माइनर लॉस कैटेगरी में डाल दिया गया है। नाउ दिस लॉस occurs in dielectric or insulator of transformer। ट्रांसफार्मर के डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर में ये लॉस होता है। And we can also say due to current flow. But this loss is so small that it is not counted in any calculation। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ट्रांसफार्मर खुद ही एक बहुत अच्छी मशीन है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है ना, मतलब ट्रांसफार्मर के टोटल लॉसेस खुद ही बहुत कम है, पूरे पूरे लॉस मिला दें तो भी बहुत कम है। 96, 97, 98% तक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जाती है, प्रैक्टिकल में जाती है। तो उसमें लॉसेस ऑलरेडी बहुत कम है, और जो लॉसेस हैं वो कॉपर लॉस और आयरन लॉस हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत इधर उधर लीकेज वो कुछ होता रहता है, लेकिन वो इतना छोटा है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी समझने के लिए पढ़ा जाता है, काउंटिंग में नहीं लिया जाता है इसको। जब आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो आप डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं लेंगे। फोर्थ वन इज स्ट्रे लोड लॉस। स्ट्रे लोड मतलब ट्रांसफार्मर ने किसी और को भी पावर सप्लाई किया है, लेकिन वो लोड नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा कोई आदमी या जो जो चीज इससे पावर लेके गई वो स्ट्रे लोड है, ठीक। अब होता क्या है, दिस इज ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। दिस loss is due to leakage flux। linkage flux and leakage flux are two properties। जो भी फ्लक्स वाइंडिंग से प्रोड्यूस हुआ है वो फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग को कट करना चाहिए। अगर वो दूसरी वाइंडिंग की तरफ ना जा करके कहीं और चला गया और ट्रांसफार्मर के किसी और पार्ट को कट किया, तो वहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और लॉस होगा, पावर लॉस। उस पावर लॉस को स्ट्रे लोड लॉस कहेंगे, और ये भी बहुत स्मॉल होता है, इट इज अ माइनर लॉस। तो दिस लॉस इज ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। When leakage flux cuts other conducting parts of transformer, there is induction and power loss, and such losses are known as stray load loss। उनको stray load loss कहते हैं।
and these are also minor losses which are not counted in any calculation. तो इनको भी किसी कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते. आगे चलें. जी. So by counting all the losses, we can go for efficiency of transformer. So efficiency of any machine is actually output power upon input power. Or we can talk in terms of energy also. And percent efficiency is if we multiply this quantity into 100. Right. So directly अब calculation पे आए. So in transformer we can say percent efficiency is V2 I2 cos phi 2 upon, या थोड़ा सा इसको हम पहले ही मॉडिफाई कर लें. You can say output upon output plus losses. हो सकते हैं इसको. देखिए एफिशिएंसी जनरली आउटपुट अपॉन इनपुट में निकाला जाता है एंड आप दूसरी मशीनों में भी निकालेंगे. कभी कभी जैसे मोटर है, मोटर में इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर होता है, आउटपुट मैकेनिकल पावर होता है. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा इलेक्ट्रिकल टर्म्स में रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करना आसान है, मैकेनिकल क्वांटिटीज को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है. मैकेनिकल पावर मेजरमेंट करने का कोई तरीका आप जानते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता मैकेनिकल पावर. आप कैलकुलेशन टॉर्क इनटू ओमेगा वगैरह से करते हैं. सो जो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का वो ये है. अब लॉसेस कितने होते हैं? V2 I2 cos phi upon output is V2 I2 cos phi plus copper loss plus iron loss. Now, R percent efficiency is equal to V2 I2 cos phi upon V2 I2 cos phi plus I2 square R02 plus iron loss into 100. फॉर्मूला क्लियर है? अब इसी फॉर्मूले से बहुत कुछ बनता जाएगा साथ में. अब क्वेश्चन करिए. 10 kVA 200 by 400 volt 50 hertz single phase transformer has rated copper loss of 200 watt and rated iron loss of 100 watt. Now calculate the efficiency at full load. 0.8 power factor
लैगिंग। आप लोग ट्राई करेंगे या इस बार हेल्प चाहिए? मैं स्टार्ट करूं, आप कैलकुलेट करेंगे? जी सर। What is V2 I2? We know that percent efficiency is V2 I2 cos phi upon V2 I2 cos phi plus Pi plus PCU into 100. Here I2 is rated current, here rated load. Okay, तो इसको एज इट इज पुट कर देंगे। वोल्टेज ट्रांसफार्मर का कभी चेंज होता नहीं है। I2 is rated current, so V2 I2 is nothing but 10 kVA, 10,000. What is cos phi? 0.8 upon again 10,000 into 0.8 plus iron loss कितना है? 100 watt. Copper loss 200 watt. कर दीजिए कैलकुलेट। सर 96.38 है क्या? हाँ, जस्ट कैलकुलेशन ही है। नाइन्टी सिक्स पॉइंट ठीक है। 38 बस मैं चेक कर लेता हूँ। 10,000 into 0.8 is 8,000. 8,000 plus 100 plus 200. Eight thousand divided by 8,300. Answer into 100 is 96.3855. Answer. Now, अब एक चीज और हमें देख सकते हैं, efficiency is not constant, क्योंकि I2 constant नहीं होता। Yes or no? यस सर। We can also conclude efficiency is not constant since I2 या load is not constant. और efficiency हमें ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिकल कभी भी कम efficiency की चीज क्यों चाहिए होगी भाई हमको? लॉजिकली हमें efficiency ज्यादा चाहिए, राइट? तो कब मिलेगी हमें? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लोड, सॉरी efficiency डिपेंड्स ऑन लोड, और हमें मैक्सिमम कब मिलेगा ये जानना है। सो वी कैन गो फॉर कंडीशन ऑफ maximum efficiency. Efficiency is V2 I2 cos phi upon V2 I2 cos phi plus Pi plus I2 square R0. अब जब आप लोड चेंज करेंगे तो I2 चेंज होगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा या मिनिमा अगर लगाएं तो डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना पड़ता है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में I2 है। ज्यादा बेटर रहेगा कि एक तरफ से आप रिमूव कर लें। सो कैन बी राइट efficiency is equal to V2 cos phi upon V2 cos phi plus Pi upon I2 plus I2 R02. Yes or no? Numerator denominator
दोनों साइड मैंने I2 से डिवाइड कर दिया। जी सर। ठीक, नाउ फॉर मैक्सिमम efficiency d eta of z by di2 equal to 0 or d by di2 of denominator v2 cos phi plus pi upon I2 plus I2 R02 is equal to 0. डिफरेंशिएट करें, V2 cos phi I2 है ही नहीं यहाँ पे, it does not depend on I2, 0. 1 upon x pi कांस्टेंट, I2 नीचे है, 1 upon x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? What is d by dx of 1 upon x? minus 1 by x square. minus 1 by x square. This is minus pi by I2 square, लिख सकते हैं, जी सर। plus R02 equal to 0. That means pi by I2 square is equal to R02. This pi is equal to I2 square R02. What is R0 I2 square R02? Loss. Copper loss. So PCU must be equal to pi. Or so I2 is equal to under root pi by R02. Take this is your condition for maximum efficiency. Any statement if we write, so maximum efficiency is obtained in transformer when copper losses कॉपर लॉस ही वेरिएबल है तो चेंज वही होगा, आयरन लॉस वेरिएबल नहीं है। कॉपर लॉसेस become equal to iron losses of transformer, and more correctly when variable losses become equal to constant losses. ठीक है, हमारे पास चार तरह के लॉस थे ना, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस, सॉरी कॉपर लॉस, आयरन लॉस, स्ट्रे लोड लॉस, एंड व्हाट फोर्थ वन इज डाइलेक्ट्रिक लॉस. So this iron loss, डायरेक्ट्रिक लॉस एंड स्ट्रे लोड लॉस, ये वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे और फ्लक्स पे, और ट्रांसफार्मर का सप्लाई वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए इनको हम कांस्टेंट कहते हैं. चेंज होता है लोड, और लोड पे केवल कॉपर लॉस डिपेंड करता है. सो वी से दैट कि copper losses are the only variable losses and remaining all three are constant losses. अब इसी में अगर क्वेश्चन बनाएं, so that the question is, what is the condition for maximum efficiency in
transform. Options are PCU is equal to PI. Option B, variable loss is equal to constant loss. Option C, PCU is more than PI. Variable loss is slightly higher than constant loss. इस पे टिक करेंगे ए पे या बी पे? बी पे बी पे टिक करेंगे आप. बी नहीं होगा देन ए पे टिक करें. दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी. कैलकुलेशन में हमने दो लॉसेस को काउंट नहीं किया है, उनको काउंट करें तो हम लिख सकते हैं वेरिएबल लॉस मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट लॉस. वेरिएबल लॉस में सिर्फ कॉपर लॉस है, कांस्टेंट लॉस में तीनों आ जाएंगे. काउंट करें या ना करें आपकी मर्जी. आगे चलें. नाउ एफिशिएंसी फार्मूला हमने देख लिया और हमें ये भी पता है कि वो लोड पे डिपेंड करता है. हमने लिखा है I2 के टर्म्स में. अगर I2 कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो एफिशिएंसी का फार्मूला कैसे लिखेंगे? फार्मूला फॉर एफिशिएंसी on variable load condition. Now, what do you mean by variable load condition, or how do you we represent the variable load condition? Variable load condition means what? I2 is replaced by XI2. Yes or no? Therefore, percent efficiency is X V2 I2 cos phi on X V2 I2 cos phi plus X square PCU plus PI into 100. अगेन अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन निकालना चाहें, मैक्सिमम एफिशिएंसी is equal to V2 I2 cos phi upon V2 I2 cos phi plus X DCU plus PI by X into 100. And for maxima, d upon dx V2 I2 cos phi plus X PCU plus PI by X must be equal to 0. 0 plus PCU minus PI by X square equal to 0. That means X is equal to PI upon PCU का अंडर रूट. This is, we call it load fraction for maximum efficiency. PI is the rated iron loss, जो कभी चेंज नहीं होगा. PI is the rated copper loss, जो रेटेड लोड पे होता है. लोड चेंज करेंगे तो वो x टाइम्स हो जाएगा और अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट एफिशिएंसी चेंज होगी. इस लोड फ्रैक्शन पे x पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा.
सर क्लियर है जी? सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना सर, वो हेडिंग से। जी जी। नोट करके बताइए बेटा। हो गया? जी Now we have some technical questions. Question number 1. In a transformer, rated iron loss and copper loss are 200 watt and 400 watt respectively. At what load condition it will have maximum efficiency? Option A. Option B. 50% of rated load. Option C. 100%. It's 141.4%. बताइए आंसर। 70.7%. 70.7% of Rated rated load. load. Solution. X is equal to under root pi upon PCU. Yes. X is equal to under root 200 by 400. That is 1 upon under root 2 is 0.707. So therefore percent X is what? 70.7%. Yes. Answer. Similarly, we have question number 2. A transformer has rated copper loss and iron loss of 200 watt and 400 watt respectively. At what load condition transformer will have maximum efficiency? %50 of rated load. See, 70.7% of rated load. 141.4% of the rated load, and D is 100% of
रेटेड लोड, या x के टर्म्स में भी क्वेश्चन के ऑप्शन हो सकते हैं, x इक्वल टू 0.707, x इक्वल टू 0.5, इस तरह से भी आंसर हो सकता है। व्हाट इज द आंसर? जी सर। जी, सी और डी? जी सर। आप x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू इज अंडर रूट 400 by 200, this is under root 2. Under root 2 is 1.414. Therefore, percent x is equal to 100 से मल्टीप्लाई करिए 141.4%। 141.4% आंसर यही आ रहा है ना? तो लॉजिकली मैथमेटिक्स से आंसर कितना मिलेगा? 141.4%। लेकिन क्या 100% से ऊपर जा सकते हैं आप लोड? नो सर। नहीं। रेटेड लोड से ऊपर लोड नहीं दिया जा सकता ट्रांसफार्मर को, इट विल बी अ फॉल्ट कंडीशन। सो ऑल्दो आपका आंसर ये आ रहा है, बट आंसर इज 100% ओनली। मैथमेटिक्स से कुछ भी आए, आंसर 100% होगा। क्लियर? यस जी सर। सर। नाउ कंक्लूजन पे आते हैं। पहला पॉइंट, if rated copper loss is more than rated iron loss, then condition for maximum efficiency is x equal to under root pi upon pc. Yes or no? Second, जी सर। if rated iron loss is more than rated copper loss, then maximum efficiency is always obtained at rated load condition. Rated load condition मतलब 100%, राइट? अच्छा, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो आपकी कॉलोनी में लगे हुए हैं, क्या ये कभी रेटेड लोड पे रहते हैं? क्या सभी लोग अपने घर के सारे स्विच एक साथ कभी ऑन करते हैं? जी सर। कब रहता है बेटा ऐसा? नहीं नहीं होता होता। सर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कभी रेटेड लोड पे काम करता है? नहीं सर। नहीं, फुल लोड पे कभी काम नहीं करता है वो। नहीं। तो वो बेहतर काम करे इसलिए उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी फुल लोड पे नहीं मिलनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा इस तरह से डिजाइन होते हैं कि उनकी मैक्सिमम इफिशियंसी 50% लोड के आसपास मिले। इस तरह से उनका रेटेड आयरन और कॉपर लॉस रखा जाता है। पावर ट्रांसफार्मर नियरली फुल लोड पे ऑपरेट होते हैं हमेशा, तो उनका डिजाइन ऐसा होता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी हमेशा रेटेड लोड या फुल लोड के आसपास मिले।
So we have third point, which is distribution transformers are always designed in such a way that maximum efficiency obtained is maximum obtained is quotient around efficiency is obtained. Maximum efficiency is obtained around 50% of rated load. And power transformers are always designed so that maximum is obtained near rated load condition. आगे चले, इफिशियंसी कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। ठीक, सो चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए. We have a question, and question is a 10 kVA 200 by 400 volt 50 hertz transformer has efficiency of 95% at 50% load and 0.8 power factor lagging condition, and 97% at full load UPF. Find rated copper loss of transformer rated iron loss of transformer, a condition for maximum efficiency. सॉल्व करेंगे? आप सॉल्व करेंगे? मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लूं क्या? जी जस्ट फॉर वाटर. किसी का आंसर सॉल्व करूं मैं? कोई है क्लास में? जी सॉल्व हुआ किसी से? सर
48. पे करता हूँ, ठीक है। So case 1, efficiency is 95% is 0.95 when 50% load means x की वैल्यू कितनी है 0.5 into 10,000 into cos phi कितना है 0.8 upon 0.5 into 10,000 into 0.8 plus 0.5 का square is 0.25 rated copper loss plus rated iron loss। इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत? x v2 i2 cos phi upon x v2 i2 cos phi plus x square pcu plus pi। No, sir. 0.95 is equal to, this is 4,000 upon 4,000 plus 0.25 pcu plus pi is equal to 0.95 4,000 plus 0.25 pcu plus pi is equal to 4,000। अभी ये जरा कांस्टेंट वाले को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। 0.95 into 4,000 minus 4,000 is 0.05 into 4,000, yes or no? Zero point two five PCU plus PI is equal to 0.05 into 4,000 is 200। और ये 0.95 नीचे आएगा, जीरो पॉइंट टू फाइव PCU plus PI is equal to 200 divided by 0.95, 210.40. 210.526, 210.526, equation number 1। Okay, now we have case 2. What is case 2? 0.97 is equal to full load unity power factor is 10,000 upon 10,000 plus PI plus PCU. PI plus PCU. 0.95, 0.97 minus 1 is 0.03. 0.03 into 10,000. 300 upon 0.97. करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. 300 you हाँ?
300 divided by 0.97. 309.27. 309.27. Question number 2. Subtract कर दीजिए. Pi plus 0.25 PCU is 210.526. Minus. So that means 0.75 PCU is equal to 309.27. 309.27 minus 210.526, 98.744. Divided by 0.75. PCU is equal to 131.66 watt. Answer. So Pi is equal to 309.27 minus 131.66. Pi is equal to 177.611 watt. And condition for maximum efficiency. Yes, X equal to 100%. Rated iron loss is more than rated copper loss. 100% efficiency पे हमेशा 100% load पे हमेशा maximum efficiency मिलेगा. So total इतना क्वेश्चन बन सकता है आपका efficiency से. So we have two topics left. One is voltage regulation. Another one is testing. आज ये क्लास दोनों खत्म नहीं हो पाएगा. कल एक लंबी क्लास करते हैं. मशीन खत्म कर देंगे इसको, ट्रांसफार्मर को. 3 आवर क्लास में हो जाएगा ये. कल करें? यस सर। मेरे लिए आज मुझे लगता है आज के इतना बहुत है. अभी और लोड आने वाला है आपके ऊपर.